Okay, sir. So, hello everyone, and very good afternoon. So, welcome everybody, and very good afternoon. So, let's see who all are live with us now. So, Vansh is there, Janvi, Asha, Amit, Mohammed, Chanchal, Swati, Vedehi, Parth, Pratima, Khushi, Varun, Vidisha, Anant. Great. So, welcome everybody, and very good afternoon. So, in today's class, we have to do the chapter correlation. Now, what is the meaning of the term correlation? Correlation हम किसे कहते हैं? So correlation is basically the relationship between two variables. कि जब दो variables आपस में कैसे relate करते हैं, that is basically known as correlation. For example, if we talk about height and weight, so normally what happens is, as we say, if height increases, then of course weight also increases. So when both of the variables are in same direction, जब दोनों variables same direction में होते हैं, then they are said to be positively correlated. दोनों में correlation कैसा होगा? Positive रहेगा. But when both of the variables आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है और दूसरे की वैल्यू डिक्रीज होती है, देन कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव. राइट? सो कोरिलेशन का मतलब सिंपली क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स and these two variables can move either in the same direction or in opposite direction. So when they are moving in the same direction, then correlation is said to be positive. And when they are in different direction, then correlation is said to be negative. Okay? So let us move with the topics. Now the first point here is bivariate data. Now what do we mean by the term bivariate data? Bi means two. So when there are two variables at the same point of time, bi means two. So two variables at same point of time, then it is known as bivariate. So two variables at same point of time. So let us understand this with the help of some example. So let's say some data is given to us. So this data basically says it is marks in statistics and marks in mathematics. Marks in statistics and marks in mathematics. So these are the two variables. तो दो वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल हैं and all these are the different marks. Now here let's see the table. Yeah, this is the table. Now we have to make some conclusions. We have to draw some conclusion out of this. So this is a first variable, marks in mathematics, and marks in statistics is the second variable. So एक टेबल में जब एक साथ में दोनों वेरिएबल आ जाते हैं, then it is known as bivariate frequency distribution. Such kind of distribution is known as bivariate frequency distribution. Now see, if somebody asks you, like, if a student has secured 0 to 4 marks in statistics, then how much will be the score in mathematics? तो हम ऐसा कैसे आंसर कर सकते हैं? तो you have to see this table. This X denotes marks in statistics. तो 0 to 4. Now अगर किसी ने 0 to 4 मार्क्स सिक्योर किया है स्टैट्स में, तो उनमें से मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं? तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 0 to 4 मार्क्स है, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 4 to 8 मार्क्स है, टू स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 8 to 12 मार्क्स है, एंड 12 and 16 and 16 to 20 में कोई भी नहीं है. There is no one here. So in total there are 4 students
जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। तो 0 to 4 स्कोर करने वाले स्टैटिस्टिक्स में कितने स्टूडेंट्स है? 4 स्टूडेंट्स है। इफ somebody asks how many students are there scoring 16 to 20 marks in mathematics, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ का स्कोर है 16 to 20? तो इसके सामने का फिगर आपको चेक करना है। द रिजल्ट इज 10। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर होगा 16 to 20। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल से हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक साथ में दो वेरिएबल्स है। सो इट इज अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल? So you can see the gross total column. This denotes 50 students. Whether you are talking about mathematics or statistics, there are in total 50 students who have appeared for the test. Now, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा? दिस वी हैव टू डिस्कस नाउ। एग्जाम में क्या इसके अंदर कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी? सो द फर्स्ट पॉइंट विच कैन बी आस्क्ड इज नंबर ऑफ सेल्स। Number of cells in bivariate frequency table. Now basically what is cells? Cell हम किसको बोलते हैं? Cell means वो जगह जहां पर हम frequency को लिखते हैं। It is a place where we write the frequency. Let's say all these are the boxes: 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10, then 5 more, 15, 20, and 25. So in short, we can write a formula for number of cells. You can write down number of cells is equal to number of rows multiplied by number of columns. So rows multiplied by column. How many rows are there? You can check. There are 5 rows. And how many columns are there? 5 columns are there. So in total, there are 25 cells. तो 25 cells होते हैं इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। The first concept for today which we had done is number of cells in bivariate table. So number of cells का calculation कैसे होगा? Rows multiplied by column. So any doubt in this? You can ask till now. Now second one is the marginal distribution. Marginal distribution का मतलब है margins. तो कितने मार्जिन यहाँ पर अवेलेबल है? तो जितने वेरिएबल उतने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंस देयर आर टू वेरिएबल्स, so there will be two marginal distribution. One distribution is for marks in statistics and second distribution is for marks in mathematics. So these are the two marginal distribution. तो जितने वेरिएबल होंगे उतने ही क्या बनेंगे? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, Om Gupta says crystal clear. Okay. Mrinalika says no doubts. Great. So marginal distribution का मतलब क्या है? जितने वेरिएबल उतने ही मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे। So of course in bivariate distribution there will always be two marginal distribution, that is fixed. Now the next point is about conditional distribution. अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपको एक कंडीशन दी जाएगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरी टेबल बनानी है। लेट्स से अगर मैंने कहा कि किसी स्टूडेंट के मैथ्स में मार्क्स है 0 to 5, तो इट इज 0 to 4। किसी स्टूडेंट के मैथ्स में मार्क्स है 0 to 4, तो उनके स्टैट्स में कितने मार्क्स आए हैं? तो यू हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट टेबल। इस 0 to 4 लाने वाले 1 स्टूडेंट है, 4 to 8 मार्क्स सिक्योर करने वाला भी 1 स्टूडेंट है, 8 to 12 वाले 1 स्टूडेंट है, 12 to 16 में 0 एंड 16 to 20 में भी 0। तो दिस इज द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। 4 to 8 है तो स्टैट्स में कितने होंगे? तो ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज फॉर 8 to 12, फोर्थ कंडीशन 12 to 16,
Fifth condition 16 to 20. Then similarly हम ये condition stat पे भी apply कर सकते हैं. 6, 7, 8, 9, and 10. So in short, there is one simple formula, that is number of rows plus number of columns. Rows कितनी है? 5. Column कितनी है? 5. Therefore, simply add and your result is 10. So there will be 10 conditional distribution. There will be 10 conditional distribution. Okay. All right. So let's do a quick recap. Bivariate frequency distribution means when there are two variables at same point of time in a table, then it is known as bivariate frequency distribution. Now, first calculation is for number of cells. Cell means a place where we can write down the frequency. So how to calculate number of cells? It is number of rows multiplied by number of columns. If there are 2 rows and 3 columns, so 2 multiplied by 3, it will become 6. If there are 4 rows and 10 columns, so 4 into 10, it will become 40. So in this way, you can calculate number of cells. Second is marginal distribution. They are always 2. And the third one is conditional distribution. So it is number of rows plus number of columns. Simply you have to add. So these are the 3 points in bivariate table. Okay. Now, let's move towards the correlation analysis. So now, as we had discussed in the beginning, correlation is categorized as positive or negative. So when both the variables are in same direction, then correlation is said to be positive. So it can increase, both of them can be in increasing direction, or both of them can be in decreasing direction. But the direction should be same. Then correlation is said to be positive. Now, let's take few examples. Price and demand. Price and demand. So what will be the correlation? Positive or negative? So you might have done in economics, if price of a commodity increases, then its quantity demanded decreases. So both the variables are in opposite direction. So correlation is said to be negative. So correlation will be negative. Then let's take one more example. Temperature and sale of cold drinks. Temperature and sale of cold drinks. So what kind of relation will be there? So simply we can identify if temperature increases. If there is increase in temperature, गर्मी का सीजन आ गया है तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. So there will be positive correlation. There will be positive correlation. Okay. All right. Now, sometimes there are few variables जिसका एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल, x is getting increased, but there is no change in y. There is no change in y. Or if y changes, but there is no change in x, that means these two variables are unrelated. इन दोनों में कोई relation नहीं है. So in that case, correlation will be zero. Correlation will become zero. So let's take few examples. Temperature and sale of woolen clothes. Temperature and sale of woolen clothes. So what kind of relation will be there between these two variables? So you can say if temperature increases, sale of woolen clothes decreases. क्योंकि गर्मी में woolen clothes कौन खरीदता है? And similarly, if you say if temperature decreases, sale of woolen clothes increases. So correlation will be negative because they are moving in opposite direction. So correlation is negative. Right? Then size of shoes
size of shoes and intelligence, इन दोनों में कैसा कोरिलेशन होगा? व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विल बी देयर? साइज ऑफ शूज एंड इंटेलिजेंस, इफ शूज का साइज इंक्रीज हो गया तो क्या इंटेलिजेंस भी ज्यादा होगी? किसी के पैर बड़े हैं तो क्या दिमाग भी ज्यादा होगा, या किसी के पैर छोटे हैं तो दिमाग बड़ा मिलेगा? ऐसा कुछ भगवान डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? नो, देयर इज नो कोरिलेशन. So in such a case, we can say that there is no correlation. Correlation will be zero. So Sindhu is asking, this is old or new syllabus? See, this topic is exactly same, whether the course is old or new. So no need to worry. Anjali says no relation, that's correct. Ritu says unrelated, that's correct. Rohit also no relation, perfect. So in these cases, there is no relationship. Now, the next one is measures of correlation. Now, how can we measure correlation, or what are the ways by which we can measure correlation? कैसे correlation को measure किया जा सकता है? This we have to understand now. So, correlation can be measured using different methods, using different formulas. The first method to measure the correlation is known as scatter diagram. The first method is known as scatter diagram. So let us understand this scatter diagram. Now, this is a simple diagram, and using this, we have to understand whether the correlation is linear or it is curvilinear. So let us come towards the figure. Yes. Now, if you see the first one, the first figure 17.1, it says the pattern is going in upward direction. The pattern is going in upward direction. If you see clearly, X is getting increased, Y is also getting increased. दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. X increases, Y also increases. So in such a case, we can say that value of correlation, the correlation will be positive. The correlation will be positive. Now, one thing which is very much important, which we have to know, is the value of correlation always lie from -1 to +1. Value of correlation lies from -1 to +1. And correlation is denoted by small r. Small r. So R lies from -1 to +1. So R can be -1, -0.9, -0.85, then positive 0.80, 0.99, maximum it can be 1. But if your result is more than 1, like 1.5, 2.1, then in that case, your answer will be galat. It will be incorrect, right? Your answer will be incorrect because there are fixed values. Correlation always lies from -1 to +1. It cannot exceed the limit. So if your answer is lying beyond this limit, that means there is some calculation mistake. So you have to understand that this is always the limit which will be followed. Now, this was the first figure which says correlation will be positive. So positive means the value will lie from 0 to 1. Value will lie from 0 to 1. Now, second example, if you see, in case of second example, there is a straight line moving upwards. Straight line moving upwards. It shows that जितना change x में हो रहा है, बिल्कुल exactly same change किसमें होता है y में. X अगर 10% rise हो रहा है, Y is also getting increased by 10%. So both of them are moving in same direction and in with the same values. दोनों में जो change हो रहा है, that is exactly the same. So in such a case, correlation is known as
perfectly positive correlation or perfect positive correlation. So it means the value of correlation is only plus 1. The value of correlation is plus 1. Okay, understood? So it will be plus 1. Then let's move towards the next figure, 17.3. Now this time we can see that values are moving downwards. Values are moving in downwards direction. So x is getting increased, but y is getting decreased. जैसे जैसे हम इस ग्राफ पे आगे बढ़ते हैं तो x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है एंड y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बिकॉज हाइट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. हाइट यू कैन सी दैट स्लोप इज गेटिंग चेंज्ड. हाइट धीरे धीरे कम हो रही है. सो y इज डिक्रीजिंग, x इज इंक्रीजिंग. So x increase, y decrease. So therefore correlation will be negative. Correlation कैसा हो रहा? Negative. Okay. Then next one, 17.4. Perfect negative correlation. Now in this you can see that there is a downward movement in this curve and with a straight thin line. So when the pattern is moving in downward direction, it again shows that x is increasing, y is decreasing, but their ratio is same. They are getting changed in the same ratio. X is increasing by 10%, y is decreasing by 10%. So correlation will be perfect negative, that is minus 1. Correlation will be perfect negative minus 1. Okay. Then the next one, 17.5. Now, in this case, we can see that there is no downward or upward pattern. It is completely scattered. ये completely scattered है. कभी value right, then left, up, down, अलग-अलग जगह पे values scattered है. There is no particular pattern. It means there is no correlation. So value of correlation will be 0. It is unrelated. And in the last case, 17.6, it says curvy linear correlation. So curvy linear means when there is a curve, जहां पे एक curve बनता है, it is known as curvy linear correlation. So curve कैसे बनता है? Values are getting increased first. Starting में value increase हो रही है. जब value increase हो रही है, then we can say that x is increasing, y is also increasing. तो यहां तक कोरिलेशन कैसा है? पॉजिटिव. देन एक पॉइंट के बाद में ग्राफ इज गेटिंग डाउन. इट शोज दैट x is getting increased further but y is decreasing. x की वैल्यू तो अभी भी इंक्रीज हो रही है बट y is decreasing. So here correlation will be negative. So in curvilinear, in the beginning phase, correlation will be positive and after that it will be negative. So there is the curve here, so it is known as curvilinear correlation. Okay, understood everybody? Om Gupta says, after your teaching, correlation is now getting very easy to me. That's great. So this was the first method, that is scatter diagram. Now, what is the drawback of this method? The main drawback is we can simply get an idea. हमको सिर्फ एक rough idea लगता है कि value क्या हो सकती है, but we are unable to find the exact figure. अगर हमें exactly पता लगाना है कि correlation कितना है, तो हम नहीं पता लगा सकते. सिर्फ इतना हमें पता चलेगा कि positive है या नेगेटिव है, जीरो है, +1, -1, दैट्स इट. एग्जैक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते लाइक कोरिलेशन इज 0.63 और 0.65. ऐसा कोई कोरिलेशन की वैल्यू
हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ स्कैटर डायग्राम. Okay, so the next one. Now the second method is known as Carl Pearson product moment correlation coefficient. This second method is basically Carl Pearson's method, and this method is one of the most important methods. This is regarded as the most important method. So you can highlight this. This is the best method for finding correlation between the two variables provided. Condition है, condition क्या है? The relationship should be linear. Linear का relation होना चाहिए, not curvilinear. जहां पे curve बनेगा, this method is not useful. This method will be useful only for linear relation. That means या तो correlation positive होगा या negative होगा, दोनों एक साथ में नहीं आ सकते, तभी ये method applicable है. Okay, all right guys. So now, what is the definition of this? So Pearson's correlation coefficient is defined as the ratio means one value will lie in numerator, other will be in denominator. The ratio of covariance between the two variables to the product of standard deviation of two variables. So it is the ratio of covariance between the two variables to the product of standard deviation of two variables. Now, this is the definition, and using this definition, we can write down the formula. So the formula says correlation is equal to covariance divided by standard deviation of x multiplied by standard deviation of y. So let's write here correlation is equal to covariance upon neta x into neta y. Covariance divided by neta x multiplied by neta y. So this becomes the formula. So in order to calculate correlation, you have to find out three values. One is covariance, second is standard deviation of x, and third one is standard deviation of y. So these three values are required. Now, how to calculate the covariance? Now, in order to calculate the covariance, you can write down the formula. The next formula basically denotes covariance. Now, in this chapter, Carl Pearson is having 4 different formulas. And using all these formulas, you can calculate correlation coefficient. Answer will be same in all the formulas of Carl Pearson. तो कार्ल पियर्सन का कोई भी फॉर्मूला यूज करें, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा. देयर विल बी नो चेंज. सो द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द कोरिलेशन इज सिंपली कोवेरिएंस divided by neta x into neta y. This is the first formula. Now, in this formula, the problem is to find out the value of covariance. तो covariance को हम कैसे निकालेंगे? तो covariance को solve करने का formula है sigma x minus x bar multiply by y minus y bar upon n. Upon n. This is the first formula. Alternatively, there is one more formula. Sigma xy upon n minus x bar into y bar. So these are the two formulas for the calculation of covariance. Okay. Now, how to calculate standard deviation? This we have already covered in dispersion chapter. So this you already know how to calculate the standard deviation. So overall, this was the first formula to calculate correlation in Carl Pearson method. The second formula
The second formula is this. This is known as basically summation method, or you can say direct method. The formula looks lengthy, but it is not at all. You can easily learn this. It says n sigma xy minus sigma x into sigma y whole divided by root of n sigma x square minus sigma x whole square. Similarly, n sigma y square minus sigma y whole square. So this is the complete formula for correlation. So this is the second method. So the easy way to learn this formula is like x and y are together initially. Starting में x and y दोनों साथ में है. Okay, understand very carefully. Starting में x and y दोनों साथ में है. n के आने की वजह से दोनों अलग हो गए. Both are separated, so it becomes sigma x and sigma y. And फिर दोनों की अलग अलग फैमिली बन गई. One is for x and second is for y. So in this pattern, you can easily remember the formula. Okay, so n sigma xy. n के आते ही xy की दोस्ती खत्म हो गई, तो सिग्मा x एंड सिग्मा y दोनों अलग हो गए और उसके बाद में दोनों की अलग अलग फैमिलीज बन गई. तो फर्स्ट इज x फैमिली एंड सेकंड वन इज y फैमिली. So in this pattern, you can learn the formula. Okay, this is known as the summation method. Now, let us understand properties also, because theoretical question also comes in statistics. Out of 40, normally 10 to 15 questions can be theory. 10 to 15 questions might be theoretical. So you have to understand this theory very carefully. You have to learn this theory, and it is not at all difficult. It is very easy. Now, what are the properties of correlation coefficient? तो सबसे पहली property है that is it is a unit free measure. Correlation coefficient is basically unit free. इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगता है. That is kilogram, liter, meter, centimeter. Nothing is used. Correlation is simply unit free. This is the first property. Then next one, the coefficient of correlation remains invariant under a change of origin and scale of the variable under consideration. Now correlation पे change of origin and change of scale दोनों का effect नहीं होता है. Now we have covered this topic in 2-3 chapters. कहाँ कहाँ हमने cover किया था? हमने discuss किया था central tendency में. So in central tendency, we had discussed change of origin and change of scale. दोनों का effect होता है. But in case of dispersion, change of origin का कोई effect नहीं होगा. Only effect will be of change of scale. But now in correlation, दोनों का ही effect नहीं होगा. Neither change of origin nor change of scale. दोनों का effect नहीं होगा. All right. So this you have to learn. So change of origin and scale का impact दोनों पे नहीं आता है. ना तो change of scale का, ना ही origin का in case of correlation. Now let's move towards some practical questions. (17.2). So let us understand this. Now the question is very much easy. Directly आपको कुछ values given हैं, formula में आपको put करना है, and you have to find the result. Now कुछ values given हैं. कौन सी values given है? n is 10. n is given. Sigma xy, sigma x square, sigma y square, sigma x, and sigma y.
ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। नाउ अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज आपको ये डिसाइड करना है विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई। जो भी फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग लग रहा है उसका आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? द फॉर्मूला विल बी समेशन मेथड और यू कैन सी द डायरेक्ट मेथड। नाउ अप्लाई ऑल दीज वैल्यूज, पुट ऑल दीज वैल्यूज। n is 10, then sigma xy is 220 minus sigma x 40 multiplied by sigma y 50 divided by root of n sigma x square. So n is 10, sigma x square is 200 minus sigma x ka whole square. So it will be 40 whole square multiplied by root of again n into sigma y square and minus sigma y ka whole square. So in this way, you have to substitute the values. Now multiply and divide and get the results. So यहाँ तक कोई challenge, कोई problem किसी को? Let me know. अभी तक कोई doubts? No, nothing. Okay, so most of you are saying no doubts, no doubts. Okay, so till here there is no doubt. Now the next one is, this time values are not given. इस बार आपको values given नहीं है, तो क्या given है? Series is given, series x and series y. These two series are given. और अब इस सीरीज से आपको क्या करना है? कोरिलेशन कैलकुलेट करना है यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, this simply means Carl Pearson method you have to use. This means Carl Pearson method is required. Now, to solve this, let's make the table first. So x is given, y is given. According to the formula, हमें क्या क्या चाहिएगा? सिग्मा x चाहिएगा, x का टोटल, सिग्मा y is required, y का टोटल, देन दोनों का प्रोडक्ट सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई कैसे आएगा? x मल्टीप्लाई बाय 5, सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई देम। So 2 into 9 is 18, 3 into 8 is 24, 5 into 8 is 40, and so on. In this way, you can multiply and find the value. और क्या required है? X square. So 2 square is 4, 3 square is 9, and so on. Similarly, Y square is also required. तो ये सब करने से क्या होगा? आपकी required values आ, okay? So you have got the required values. Now, after this, you have to simply substitute the value and get the result. So let's substitute in the formula. You can substitute in the formula and get the result. N sigma xy. How much is n? N is 6. 6 into sigma xy, 166, minus sigma x into sigma y, so 29 multiplied by 39, divided by root of n sigma x square, so 6 into 163, minus sigma x whole square, minus 29 square, multiplied by root of n sigma y square, to 6 into 279 minus sigma y whole square, so 39 whole square. So in this way, you can substitute your values and get the result.
ओके, तो जब भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला and then solve on calculator. Otherwise, you will not be able to solve completely this on the calculator. पूरा ये calculator पे solve नहीं हो पाता है directly, so it is always better to substitute the values on paper and then simplify. उसके बाद ही आप इसको simplify करें तो better रहेगा. So what is the final result in this case? The final result is negative 0.93 minus 0.93. You can calculate this. Okay, understood everyone? So Carl Pearson का method कोई भी हो, answer will remain same. Whether you use using covariance method or you can do direct method, the result will be same. So this is fourth one is similar kind of question. This can be done easily. Then this frequency question is not relevant. Yes. Now let's try the 17.6 one. 17.6. So coefficient of correlation between X and Y for 20 items is 0.4. So what is given here? Coefficient of correlation for 20 items is 0.4. So 0.4 is basically the correlation and 20 is N, number of observations. Arithmetic mean and standard deviation of X and Y are known to be 12 and 15 and 3 and 4 respectively. So 12 and 15 denotes arithmetic mean of X and Y. 3 and 4 denotes standard deviation of X and Y. So इतनी सारी values आपके पास available है. Now next क्या करना है? It was found that the pair 20, 15 was wrongly taken as 15, 20. एक पेयर था कौन सा? 20 and 15. इसको wrongly क्या ले लिया गया? 15, 20. So this is the error. Now find out the correct value. तो correct value आपको calculate करनी है. So इन दोनों में से कौन सा पेयर करेक्ट है? So the correct pair is 20, 15 and incorrect is 15, 20. Now in this case you have to do the correction first and then you have to simplify and substitute the values. So first step में हम क्या करेंगे? If you know the formula for correlation was covariance divided by standard deviation of X into standard deviation of Y. So in this case, we are having two values like correlation and standard deviation. So correlation is 0.4 equal to covariance upon standard deviation of X is 3 into standard deviation of Y is 4. So from this you can get covariance as 4.8. Covariance की वैल्यू कितनी आ गई है? 4.8. बट दिस वैल्यू इज रॉन्ग. कोवेरियंस की जो वैल्यू अभी तक हमने निकाली है ये रॉन्ग. तो हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्शन. ना कोवेरियंस का फॉर्मूला कौन सा होता है? लेट अस अप्लाई दैट फॉर्मूला. सो कोवेरियंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन minus x bar into y bar.
So you have to make the correction and find the correct value. तो इसके लिए हमें इन सब प्लेसेस पे करेक्शन करना पड़ेगा. फर्स्ट करेक्शन विल बी फॉर सिग्मा एक्स वाई. नाउ सिग्मा एक्स वाई में कोई करेक्शन नहीं होने वाला. वाई सो? बिकॉज इफ यू सी सिग्मा एक्स वाई में एक्स एंड वाई दोनों को मल्टीप्लाई करना है. करेक्ट वैल्यू है 15 एंड 20, रॉन्ग वैल्यू है 20 एंड 15. अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट विल बी सेम. तो हमने रॉन्ग वैल्यू को मल्टीप्लाई किया एंड सब्ट्रैक्ट, करेक्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया एंड ऐड, तो ओवरऑल द रिजल्ट विल बी सेम. तो सिग्मा एक्स वाई में तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई करेक्शन नहीं होगा. बट सिग्मा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स एक्स बार, वाई बार, इन सब में आपको चेंज करना पड़ेगा. तो यू हैव टू मॉडिफाई ऑल दीज. सो सिग्मा एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो एज वी नो एक्स बार इज इक्वल टू sigma x upon n. Now what is the given value of x bar? X bar की given value क्या है? Let's check from above. 12 and there are 20 items. 12 and there are 20 items. So therefore sigma x will be 240. 240. अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? इसमें करना है करेक्शन. रॉन्ग वैल्यू को हटाना है, करेक्ट वैल्यू को ऐड करना है. रॉन्ग वैल्यू है 15, करेक्ट वैल्यू है 20. सो देयरफॉर करेक्ट सिग्मा एक्स विल बी 245. 245. Similarly, we can calculate correct sigma y. तो सिग्मा y कैसे आएगा? पहले हम वही करेंगे 15 into 20, that is 300. करेक्ट वैल्यू को किया ऐड, इनकरेक्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट. तो प्लस 15 and minus 20. How much? 295. So this will be your sigma y. So इस तरह से आप सब में पहले क्या करेंगे? करेक्शन एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन. ओके. इफ यू वांट टू करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर को करेक्ट करना है तो फिर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू में एक्स स्क्वायर 15 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट 20 स्क्वायर को ऐड. करेक्ट वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड करना है, रॉन्ग वैल्यू को स्क्वायर करके लेस करना है. So in this way you can find correct sigma x square and correct sigma y square. ये सारी वैल्यूज आने के बाद now you have to substitute and get your result. Okay. Then the next one. Okay, let us understand this one. Now, here the concept is a bit different. 17.8, given that correlation coefficient between x and y is 0.8, then find out the correlation between u and v. So now, in such a case, there is a simple formula. What is the formula? It is correlation uv is equal to b into d upon mod of b mod of d multiplied by correlation of x y. Okay, this is the formula. Now what is b and d here? b and d क्या है? Amit is asking 17.6 क्या है? That you don't have to do.
because that is a very lengthy kind of thing using frequency, and one question is for half an hour. So that is not relevant for your examination and also not for your course. Okay. So here, in order to calculate the correlation between U and V, there will be two equations. First equation is U is equal to A plus bx, and second equation is V is equal to C plus dy. तो ये दो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से b की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है एंड d की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, दैट्स इट। जो भी इक्वेशन गिवन है वहां से आपको b एंड d की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है एंड गेट योर रिजल्ट। So in the given question, 2u plus 3x plus 4, तो यहां से हम पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। लेट्स अरेंज 2u is equal to minus 3x minus 4. So u is equal to minus 4 and minus 3 by 2x. So what is the value of b here? Minus 3 by 2. This is the value of b. Similarly, from second equation, 4b is equal to minus 11 and minus 16 y. So b is equal to minus 11 by 4 and minus 16 by 4 y. So from here you have to calculate the value of d. D will be minus 16 by 4, that is 4. So B and D दोनों values आ चुकी है. Now you have to substitute here and get the result. The first value is minus 3 by 2 multiplied by minus 4. Second value is mod of minus 3 by 2. When it is modular, the result will does not have any sign. Result में से sign हट जाएगा. 3 by 2 में से sign remove हो जाएगा. And also minus 4 will normally become 4. Multiply by rxy, इसको correlation की value से multiply करना है, which is 0.8. Now you can see clearly that 3 by 2 will get cancelled, 4 and 4 will get cancelled. सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, साइन बचेंगे इन दोनों के, माइनस एंड माइनस will become plus. So final value of correlation will be 0.8. तो final value correlation की आ गई है 0.8. So this is one method of solving this. इस पूरे फॉर्मूले से आप अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वे इज यू कैन डू दिस डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे करना है, अगर बी एंड डी दोनों का साइन सेम, बी एंड डी इज हैविंग सेम साइन, then in such a case RUV is equal to RXY, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, साइन भी दोनों का सेम होगा, साइन भी दोनों का सेम होगा। बट इफ द साइंस आर डिफरेंट, इफ बी एंड डी हैव डिफरेंट साइन, दोनों का साइन अगर डिफरेंट है, then RUV is equal to negative of RXY, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। That means if RXY is positive 0.8, RUV will become negative 0.8. एक की वैल्यू पॉजिटिव 0.3 है तो दूसरे की नेगेटिव 0.3 हो जाएगी। एक की अगर नेगेटिव के अंदर 0.1 है तो दूसरे की पॉजिटिव के अंदर 1 हो जाएगी। So in this way you can see that sign will get changed, दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट दिस, बी एंड डी का साइन सेम है, then it will be same result. If sign is different, then you can put negative sign. Okay. But always arrange first.
नाउ ट्राई फॉर द सेकेंड वन। सेकेंड को आपको अरेंज करना है एंड लेट मी नो द आंसर। फर्स्ट इक्वेशन को जैसे आपने अरेंज किया, एक्स का कोफिशिएंट वहां जाके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा पॉजिटिव, वाई का कोफिशिएंट होगा नेगेटिव, so the result will have different sign, that is 0.8 negative. Answer will be minus 0.8 because दोनों का साइन डिफरेंट। इन थर्ड केस x बन जाएगा पॉजिटिव, y is also positive, positive and positive will give same result 0.8। फोर्थ केस में x will become negative, y will become positive, so different है, answer will be minus 0.8, minus 0.8। So simply you have to check the sign of B and D। B and D का साइन कैसा है? अगर दोनों के साइन सेम है तो रिजल्ट विल बी सेम। अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो रिजल्ट के अंदर भी साइन डिफरेंट होगा। ओके, so in this way you can answer। So before moving further, let's take a break of 10 minutes and then we will be continuing। Okay, so let's continue after a 10 minutes break।
Okay. So welcome back, guys. Now the next point is Spearman rank correlation coefficient. So अभी तक जो हमने चैप्टर में किया था that was basics of correlation, then scatter diagram, Pearson. Now the next one is Spearman's rank correlation coefficient. Now ये method कब useful है? This also you have to learn because theoretical question comes on this topic also. So when we have to find out correlation between two qualitative characteristics, जहां पर क्वालिटी में हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, दो जजेस बैठे हैं, जजेस ने अपने अपने मार्क्स दिए हैं, तो उनके मार्क्स में कैसा कोरिलेशन है, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है, देन स्पीयरमैन रैंक मेथड इज यूज्ड. So whether it is a beauty, it is a fashion show, then it can be intelligence, honesty. तो जहां पर भी किसी क्वालिटी की हम बात करते हैं, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, वहां सब जगह स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इज रिक्वायर्ड. So this is applied to find out the level of agreement or disagreement between the two judges. कि दोनों judges का जो decision है वो कैसा है, similar है या उसमें difference है. So this can be done using this Spearman correlation method. Now formula is very short, very easy. The formula is small r, then we are writing capital R. This capital R is for rank. The formula is 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1. 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1. So this is the simple formula. Now what is d here? d का मतलब क्या है? d का मतलब है डिफरेंस इन रैंक्स, जो रैंक है उसका डिफरेंस. देन वैल्यू ऑफ r लाइज फ्रॉम -1 टू +1. r की वैल्यू -1 से +1 तक कुछ भी हो सकती है. एंड व्हाट अबाउट n? n का मतलब हो गया नंबर ऑफ पेयर्स, कितने ऑब्जर्वेशंस हमारे पास अवेलेबल है. So let us try this ninth example. Compute the coefficient of rank correlation between sales and advertisement expressed in thousands of rupees. So sales हो गया 90,000, advertisement 7,000 and so on. So let us write them in a table. एक टेबल हमने बनाया. This is X sales and Y is advertisement. Now पहला स्टेप क्या होगा? The first step is to allot the rank. रैंक को असाइन करना है. तो पहले हम सेल्स वाले फिगर को चेक करेंगे. नाउ सेल्स का फिगर क्या है? सेल्स का फिगर है 90, 85, 68. तो हाईएस्ट फिगर कौन सा है? जहां पे फिगर हाईएस्ट होगा हम उसको फर्स्ट रैंक देंगे. So in this you can check 95 is highest. So 95 is having first rank. 90 is second highest, second rank. Then 85 is on third position. 82 is on fourth position. Then 5, 6, 7, 8. So first step is to give the ranks. पहले आपको रैंक देनी है. फर्स्ट रैंक किसको मिलेगी? जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है. ग्रेटर द वैल्यू then better is the rank. Similarly, y के लिए भी आपको रैंक देनी है. तो हाईएस्ट नंबर इज 8. 8 पे मिलेगी फर्स्ट रैंक, then 7 second rank, 6 third rank and so on. So in this way you can assign all these ranks. Rank assign हो चुकी है. First step is completed now. Now what is the second step? Second step is to find out the difference. क्या निकालना है आपको? डिफरेंस निकालना है. किसका डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ रैंक.
जो भी आपकी रैंक है उसका डिफरेंस। तो 2 - 2 इज 0, 3 - 3 इज 0, 8 - 7 is 1, 6 - 6 0, 4 - 5 -1, 5 - 4 is 1, then 0 and then -1. Then next is the total of D. Now the total is 0. क्या ये total always 0 आएगा? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। Is sigma D always equal to 0? True or false? क्या आंसर हम करेंगे? क्या सिग्मा डी इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज? ट्रू और फॉल्स? कम ऑन एवरीबॉडी, यू कैन आंसर दिस वेरी इजी क्वेश्चन। क्या सिग्मा डी का टोटल ऑलवेज 0 होगा? कम ऑन एवरीबॉडी, यू कैन आंसर। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सिग्मा डी का टोटल क्या कभी 0 हो सकता है और क्या ऑलवेज 0 होगा? यस और नो, ये आपको बताना है। So D is basically x minus y. X की रैंक एंड y की रैंक का डिफरेंस। ओम गुप्ता says true. आशा says yes. मोहिल कुमार true. वैदेही true. प्रतिमा अर्पण true. टीना says false. सलोनी true. रितु true. रोहित true. गौतम also true. Chanchal is saying false. So two person are saying false. सिग्मा डी इज ऑलवेज 0, ये हमेशा 0 ही आएगा। बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं? एक्स की रैंक और वाई की रैंक को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों रैंक्स आपस में ऑलवेज कैंसल आउट हो जाएगी एंड डी का टोटल आ जाएगा 0। बट हमें कैलकुलेशन के लिए डी का टोटल नहीं चाहिए। वी रिक्वायर टोटल ऑफ डी स्क्वायर। तो वी हैव टू फाइंड आउट डी स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, -1 का 1। So here you are getting sigma d square as 4. So sigma d square आ चुका है आपके पास 4. Now substitute the value. So 1 minus 6 sigma d square is 4 upon n is 8 into 8 square minus 1. So the result will be 0.95. This becomes rank correlation coefficient. Rank correlation coefficient. All right. Now, similar is question number 10. Now, in question number 10, directly rank is given. पहले से रैंक दे रखी है, तो हमें रैंक को कैलकुलेट नहीं करना है। रैंक कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज ऑलरेडी डन। सीधा क्या निकालेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस आपने निकाला एंड देन वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को कैलकुलेट करें। सो डी स्क्वायर आ गया आपके पास कितना? 166। दिस इज योर डी स्क्वायर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। 1 minus 6 into 166 upon n. N is 10 into 10 square minus 1. Now you can simplify this and get your result. Asha Begum says done. Okay. Understood everybody? So what is the final answer?
it is negative 0.006. So value is near to 0, and whenever the value is near to 0, it means correlation is having the lowest value. जब 0 के पास में है, that means correlation is very very less. And if value is near to 1, that means there is a strong correlation. जितनी value 1 के पास में होगी उतना ज्यादा strong correlation होगा. 1 means here it can be +1 or it can be -1. So value अगर 0 के पास है और ±1 के पास है, 0 means poor, +-1 means strong. Okay. So I think everyone has solved this now. Now the next point. 11th. Now what if there is a tie in the rank? ये क्वेश्चन अभी पूछा था थोड़ी देर पहले, किसने? स्वाति ने. Yes. If values are getting repeated, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे? So what we have to do in that case? तो पहले तो हम नॉर्मल तरीके से रैंक निकालेंगे, बट उसमें भी थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा. So let's do this. So marks in economics and marks in statistics, variable x and variable y. तो पहले हम x को चेकआउट करते हैं. फर्स्ट रैंक किस पे मिलेगी? 80. 80 is having the first rank. Second rank will be for 62. 62 पे second rank. 60 पे third rank. Fourth rank is 56. Okay. Then fifth rank is 50. Now 50 is coming at two places. 50 दो जगह पे आ रहा है. तो कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन, बिकॉज 4 पोजीशंस आर ऑलरेडी गॉन. अभी बची है नेक्स्ट के लिए फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो किसको फिफ्थ रैंक दे और किसको सिक्स्थ रैंक दे? अगर हमने फर्स्ट वाले 50 को फिफ्थ दिया तो दूसरा वाला झगड़ेगा कि मुझे फिफ्थ रैंक क्यों नहीं मिला. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? दोनों का झगड़ा नहीं करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे. सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ का जो एवरेज है, that will be 5 plus 6 upon 2. It will become 5.5. So 5.5 will become the rank. Then next one is 7th rank. So in this way, you can allot the ranks. Rank for economics. Now the next is rank for statistics. First rank इसको मिलेगी statistics में 90 marks. First rank. Second rank 75. Now 75 is getting repeated 2 times. So second position and third position में tie है. So 2 plus 3 divided by 2. What is the average? Average is 2.5. Okay. So second and third rank is gone. Next is fourth rank. Fourth पे है 65 and 65 is coming 3 times. 65 3 बार repeat हो रहा है. 65 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 रैंक्स में इस बार टाई होगा. रैंक नंबर 4, रैंक नंबर 5 एंड रैंक नंबर 6. तो इसका हम निकालेंगे एवरेज, तो डिवाइड बाय 3. तो एवरेज इज 5. एवरेज आ गया 5 एंड द लास्ट रैंक इज 7. लास्ट रैंक इज 7. So in this way you can rank X and rank Y. Okay. Now next is difference. Now difference किसका निकालेंगे? X and Y का. तो difference of ranks 0. Then 4 minus 2.5 is 1.5. 3, 2.5, -5 and -2. Now this total is always equal to 0. Total आ गया है आपका फिर से 0.
Now, what is the next requirement? It is d square. तो d square आपको कैलकुलेट करना है. Find out the square of all these is 44.5. तो यहां तक आपका स्टेप हो गया. अभी तक आपने चेंज क्या किया है? इन केस ऑफ अ टाई, जहां भी टाई होगा वहां पर रैंक का एवरेज आपको लेना पड़ेगा. ओके, रेस्ट ऑल स्टेप्स आर सेम टिल हियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज देयर इज अ चेंज इन द फॉर्मूला. फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा इन केस ऑफ टाई. नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला? 1 minus 6 सिग्मा डी स्क्वायर. अब यहां पर पहले आपको लगा देना है ब्रैकेट 6 एंड सिग्मा डी स्क्वायर में लगेगा आपके ब्रैकेट प्लस प्लस क्या करना है? ए क्यूब माइनस ए अपॉन 12 प्लस बी क्यूब माइनस बी अपॉन 12 एंड सो ऑन, whole divided by n into n square minus 1. तो सिर्फ हमने क्या ऐड किया? ए क्यूब माइनस ए बाई 12, बी क्यूब माइनस बी बाई 12, ये ऐड किया है. ये ए बी सी एक्सेट्रा क्या डिनोट करेगा? दिस डिनोट्स टाई. कितनी वैल्यूज के बीच में टाई हुआ है वो आपको पुट करना है. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर. सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 44.5 प्लस प्लस क्या करना है? ए क्यूब माइनस ए अपॉन 12. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? फर्स्ट टाइम दो वैल्यूज में टाई हुआ था तो ए बिकम्स 2. 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12. देन नेक्स्ट टाइम भी अगेन टू वैल्यूज में टाई हुआ था. देयर वाज टाई बिटवीन टू वैल्यूज, so again value of b will be 2. So 2 cube minus 2 upon 12. Next time there was a tie between three values, so 3 cube minus 3 upon 12, whole divided by n into n square minus 1, so 7 into 7 square minus 1. Now you can simplify this and get the result. So 1 minus 6 into 44.5 plus 6 by 12 is 0.5 plus 0.5 and then plus 2. Okay. Now you can simplify this and get the result. The result is 0.15. So then we have given the answer 0.15. So in this way, if there is a tie in the rank, you can simplify in this manner. You can use this formula. Okay, done everyone? Now the 12th one. For a group of 8 students, the sum of square of differences in rank for mathematics and statistics was found to be 50. So 8 students, it means n is given.
Recording in progress. So let's wait for the answers. क्या आंसर आ रहे हैं? Whether he says issue है. What is the issue whether he? So everyone can solve this and get the results. Clear हो गया. Says whether he. Om Gupta is okay. Rohit all clear. Saloni is getting answer 0.4. Yes. So everyone is perfect now. 0.4 is your result. Okay. Now 13th example. For a number of towns, the coefficient of rank correlation between the people living below the poverty line and increase of population is 0.50. So correlation is given in this question, 0.5. If sum of squares of difference in ranks awarded is 82.5, find the number of towns. तो कितने टाउन हैं इसका पता लगाना है. That means you have to find the value of n. n का कैलकुलेशन करना है. So rest all is available. So 0.5 is r 1 minus 6 sigma d square is 82.5 upon n into n square minus 1. Okay. Now here you have to calculate the value of n. n का value calculate करना है. So 6 into 82.5 and then divided by 0.5. So it will become n cube minus n is equal to 990. Okay, so here you can simplify and get the result. N can be taken as common. So n square minus 1 is equal to 990. Now either you can use the options and then solve, or you can do this directly, whatever is your choice. So if you put the option 10 into 10 square minus 1 is 990. Therefore value of n is equal to 10. तो n की वैल्यू यहां से आ गई है कितनी? 10. Okay. Now the next one. Next one is a correction based question. इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है. करेक्शन क्या है? By computing rank correlation coefficient between the profit and investment for 10 year of a firm, the difference in rank for a year was taken as 7 instead of 5. Now here you have to identify what is the correction. कौन सी value correct है and कौन सी incorrect है. Taken as 7 instead of 5. 5 की जगह 7 ले लिया. That means 5 is correct and 7 is incorrect. तो ये correction हमें करना है so that we can find out the correct values. 10 years are given.
So rank correlation coefficient is 0.8. Find the correct value of rank correlation coefficient. So correct value you have to find it. Now, first you have to try this on your own. I am waiting for a minute and let me know the answer. तो पूरा completely आप ही को solve करना है अभी. I am waiting for your result. If there is any doubt, let me know in the comment section. Otherwise, you have to solve this completely. Always first step यहाँ पे क्या होगा? जो भी values given हैं, put that values in the formula first. इन values को आप पहले formula में substitute करेंगे and find out the value of sigma d square. वहां से आपका sigma d square निकलेगा. After that, make the correction in sigma d square. Okay. So come on, everybody. You can do this. तो फर्स्ट वैल्यू जो आपने यहाँ पे पुट किया है दैट इज 0.8 is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n is 10 into 10 square minus 1. So this will come on right hand side, left hand side, 6 sigma d square upon 990 is equal to 0.2. So from here, sigma d square will be 33. So sigma d square आ गया है आपका कितना 33. Now you have to do the correction in this. So Tanvi says 0.95 is the answer. Okay. तो करेक्शन के लिए अब आपको क्या करना है? माइनस रॉन्ग वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर. So minus 7 square and then plus 5 square. And then again apply the formula with the correct value. So Janvi has also got the answer. Saloni has given the answer. Ritu. Great. So now everyone is getting the answer. It's easy. So this was basically Spearman rank correlation coefficient. Now the next one is concurrent deviation method. Now what is basically concurrent method? Concurrent deviation is a very simple method and it is used when we are not serious about the magnitude. मतलब दो वेरिएबल में कितना चेंज हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं. सिर्फ हम क्या देखते हैं? चेंज कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, whether it is increase or decrease, positive or negative. सिर्फ उतना ही जो हमें चेक करना है. Then we use concurrent deviation method. So let's see. Now the formula is also very simple. RC, R is for correlation, C is for concurrent method, plus minus, then root, plus minus 2C minus M upon M. In this, C का मतलब क्या है? C का मतलब है number of concurrent deviations. Number of concurrent deviations. M का मतलब है total number of deviations. So M कैसे कैलकुलेट होगा? N minus 1. M को कैलकुलेट करना बड़ा आसान है. It is N minus 1. Okay.
So RC is equal to plus minus root plus minus 2C minus M upon M. This is the formula. C का मतलब हो गया concurrent deviations, M का मतलब हो गया number of pair of deviations. कितने deviations निकल रहे हैं? So it is calculated as n minus 1. So let us try this question 15th one. Year given है, then price and demand. Price is the first variable, demand is second variable. बिगिनिंग में प्राइस कितना है? प्राइस है 20. नेक्स्ट ईयर प्राइस कितना हो गया? 28. तो 25 से बढ़ के प्राइस हो गया 28. कितना इंक्रीज हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या देखना है? इंक्रीज हुआ, राइट पॉजिटिव साइन. फर्स्ट वाला जो स्पेस है वो ब्लैंक रहेगा, बिकॉज हम वहां पे कुछ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, उससे प्रीवियस वैल्यू अवेलेबल नहीं है. डायरेक्टली हम 28 को ही कंपेयर कर सकते हैं 25 से. सो 28 इज गेटिंग इंक्रीज, तो पॉजिटिव साइन. देन 28 से 30 इंक्रीज, पॉजिटिव. 30 से 23 हो गया, नेगेटिव. देन पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव. इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव. 35 से 34 नेगेटिव. 34 to 35 पॉजिटिव. देन नेगेटिव, नेगेटिव. वैल्यू सब में कम हो रही है, इट इज नेगेटिव. ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? आपको साइन यूज करने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारे साइन. देन नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशंस. तो प्लस एंड माइनस. नाउ ये हमने पढ़ा है, सेम साइन इज पॉजिटिव, डिफरेंट साइन इज नेगेटिव. तो प्लस माइनस इज माइनस, प्लस प्लस इज प्लस, माइनस माइनस प्लस, देन बाकी सब में क्या है? माइनस. तो सेम साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव. नाउ व्हाट इज सी हियर? सी का मतलब है कॉन्करेंट डेविएशन, दैट इज कितने पॉजिटिव साइन हैं? पॉजिटिव 1 and 2. 2 आर पॉजिटिव, तो वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 2. तो कॉन्करेंट का मतलब होता है दोनों वेरिएबल में सेम इफेक्ट का होना. अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, उधर डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो फिर हम यूज कर रहे हैं पॉजिटिव साइन. ओके, तो C is equal to 2. Now what will be M? M is n minus 1. N कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 minus 1 gives 7. M is 7. C की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आ गई. Now substitute in the formula to get the result. So formula में अप्लाई किया, प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2 into 2 minus 7 upon 7. तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? प्लस माइनस ब्रैकेट में नेगेटिव 3/7. ना इन दोनों प्लस माइनस के पीछे लॉजिक क्या है? इन दोनों प्लस माइनस का और कोई लॉजिक नहीं है. अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, उसको हटाने के लिए ही यहाँ पे प्लस माइनस का यूज किया है. तो अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, then you have to take here also negative and here also negative. अगर ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव है, इन शॉर्ट, तो आपका फाइनल आंसर नेगेटिव होगा. अगर ब्रैकेट में वैल्यू पॉजिटिव है, तो फाइनल आंसर विल आल्सो बी पॉजिटिव. सूरज इज आस्किंग M8 कहां से लिया? M is not 8, M is 8 minus 1, that is 7. M का मतलब है कितने डेविएशंस निकल सकते हैं. तो 8 वैल्यूज है इन टोटल. फर्स्ट को आप कंपेयर नहीं कर सकते, इट विल रिमेन ब्लैंक. तो डेविएशंस कितने निकल गए हैं आपके पास? 7. तो 7 डेविएशंस आर पॉसिबल. सो M becomes 7.
So bracket की value negative, result is negative. Bracket is positive, then result will also be positive. So now let's move towards the exercise questions. Regression will be done in the next session. Okay. So set A question number 1 rapid fire round. ये सारे बहुत शॉर्ट एमसीक्यू है, रैपिडली फटाफट से आपको सॉल्व करना है. Bivariate data are the data collected for two variables. अब देखो टू वेरिएबल्स सब में लिखा है, तो ज्यादा डिटेलिंग किसमें है, ज्यादा पॉइंट्स कहां पे कवर हो रहा है. टू वेरिएबल एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर सी. सेकेंड, फॉर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल द टोटल नंबर ऑफ सेल्स हम कैसे निकालते हैं, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, सो पी इंटू क्यू. Third, sum of the cell frequencies in bivariate frequency table may be. सेल्फ फ्रीक्वेंसी, इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है कभी? नो. लाइक नंबर ऑफ पर्संस, -1 -2 क्या पॉसिबल है? नो. तो फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव. क्या जीरो हो सकती है? यस, इट कैन बी जीरो. Fourth one, for a P into Q bivariate frequency table, maximum number of marginal distribution. तो marginal हमने पढ़ा था, it is only 2. जितने variable उतने marginal distribution. So answer is 2. 5. For a P into Q classification, the maximum number of conditional distribution. कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं? रोज प्लस कॉलम्स, तो पी प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर बी. सिक्स्थ वन, कोरिलेशन एम्स एट. कोरिलेशन का मुद्दा क्या है, एम क्या है? तो कोरिलेशन बेसिकली एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. सो बी लुक्स करेक्ट, बी ठीक ठाक लग रहा है हमें. Also, C option measures the extent of relationship between two variables. कितना रिलेशनशिप है? तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों ही सी सही लग रहे हैं, बट फाइनल आंसर विल बी डी, दैट इज बोथ बी एंड सी. बोथ बी एंड सी. Then regression we have not done. Eighth one, what is spurious correlation? Spurious correlation किसको बोलते हैं? स्पूरियस मीन्स जहां पे कोरिलेशन दिखने में तो है, बट वो एक्चुअल में होता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, किसी टेस्ट में आपने किसी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना था, आपने प्रिपरेशन को टाइम कम दिया एंड आपने मूवीज ज्यादा देखी, आपने ज्यादा मूवीज देखी एंड लकीली आपके टेस्ट में मार्क्स भी ज्यादा अच्छे आ गए. आपने ज्यादा मूवीज देखी और टेस्ट में मार्क्स भी ज्यादा अच्छे आ गए. तो क्या ये ऑलवेज होता है? नहीं, ये तो एक बाय चांस है कि ऐसा दोनों में रिलेशन बैठ गया है. तो एक्चुअल में ये दोनों इतना रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी हम कहते हैं दोनों हमें सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं. सो देर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो जहां पर कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, वहां पर हम कहते हैं इट इज नोन एज स्पूरियस कोरिलेशन. लेट्स टेक वन प्रॉपर एग्जांपल. इफ वी टॉक अबाउट सेल ऑफ पेप्सी, पेप्सी की सेल इंक्रीज हो गई एंड शूज की डिमांड कम हो गई. ना पेप्सी की प्राइस बढ़ने की वजह से, पेप्सी की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या शूज की डिमांड कम होती है? क्या इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है? नो.
पेप्सी एंड शूज आर टोटली अनरिलेटेड, तो इसका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिखने में हमें अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, बट एक्चुअली देयर इज नो नो रिलेशनशिप। तो ऑप्शन नंबर सी, it is the correlation between two variables having no causal relation, दोनों में कोई cause and effect relation नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वन, नाइन्थ, स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग। तो स्कैटर किसके लिए है, लीनियर या कर्वीलिनियर? इट इज फॉर बोथ, ऑप्शन नंबर डी। टेंथ वन, if the plotted point in a scatter diagram lie from upper left to lower right, upper left to lower right, so such kind of diagram, इसमें रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑफ कोर्स इट विल बी नेगेटिव। जब भी कोई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है इट इज नेगेटिव, अपवर्ड स्लोपिंग देन इट इज पॉजिटिव। 11, if the plotted points in a scatter diagram are evenly distributed, then correlation is, हर जगह स्प्रेड है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, कोरिलेशन विल बी जीरो। If all the plotted points in a scatter diagram lie on a single line, एक सिंगल लाइन पे है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो लाइन डाउनवर्ड है या अपवर्ड, सो इट कैन बी इधर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। क्या ये दोनों हो सकते हैं? नो, दोनों में से कोई एक हो, या तो परफेक्ट पॉजिटिव या फिर परफेक्ट नेगेटिव। ऑप्शन नंबर डी, इधर ए और बी। देन कोरिलेशन बिटवीन शूज साइज एंड इंटेलिजेंस, दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन इज जीरो। देन कोरिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। नाउ स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल, ब्रेक्स हमने अप्लाई किए, स्पीड रिड्यूसेस, डिस्टेंस जो अब कवर हो रहा है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। 15, स्कैटर डायग्राम हेल्प अस टू फाइंड, किस लिए काम आता है, फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन। एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन हम पता नहीं लगा सकते बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, एंड स्कैटर डायग्राम डज नॉट हैव द फॉर्मूला। ओके, so it finds basically the nature of correlation. Then Pearson's correlation coefficient is used for finding, कार्ल पियर्सन किसके लिए होता है, फॉर लीनियर रिलेशन ओनली, अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज फॉर लीनियर रिलेशन। Then 17, product moment correlation coefficient, that is we are talking about Carl Pearson. It is used to find the nature of correlation, that is positive या negative, and also the amount of correlation, उसकी exact value क्या है ये भी हम पता लगा सकते हैं। ओके, सो वैल्यू says क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर ए गिवन है, सी दिस क्वेश्चन इज आल्सो गिवन इन एडिशनल पार्ट, और वहां पर आपका आंसर पॉजिटिव गिवन है, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव गिवन है, बट द करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव इन दिस केस, यहाँ आंसर हमारा पॉजिटिव है। नेक्स्ट, the value of correlation coefficient is positive, then the point on scatter diagram tends to cluster। ना पॉइंट हमारे कहां पे, कहां से कहां तक है ये आपको बताना है। कोरिलेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, जब भी पॉजिटिव है कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, सो फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट।
Janvi is asking, can we get set B type of question exam which carries 2 marks? See, in exams, all question carry 1 marks. Okay. Set B में of course exam में आता ही है, that you have to do of course, but उसका weightage exam में 1 question 1 marks ही रहेगा, not 2. 19 R equal to 1, then all point in a scatter diagram would lie. Again the same question, lower left to upper right, because R का value है positive, so upward sloping. 20 product moment correlation coefficient may be defined as the ratio of, किसका ratio होता है, covariance to the product of standard deviation. Option number C. We have done this definition as well as the formula. And ये जो covariance की value है, इस value can be positive, negative and even 0. So covariance की value कुछ भी आ सकती है. So question number 21 says the covariance between the two variables can be either positive or negative or 0. Then 22. The coefficient of correlation between two variables can have any unit? No, it is unit free. Second is expressed as the product of units of two variables. No, it is a unit free measure. Option number C. What are the limits of correlation coefficient? क्या limit होती है? -1 to +1, including the limit. Including the limits. Option number D. Then now some question will be covered in the next also. 26. For finding the correlation between two attributes, quality जहां पे होती है, कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. So 26 का C option. For finding the degree of agreement between beauty in the two judges in a beauty contest. So beauty contest में judges के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन. If there is perfect disagreement between the marks in geography and statistics, what would be the value of correlation? Now, what is the meaning of perfect disagreement? अगर values एक में 1, 2, 3, 4 है, दूसरा exactly reverse है 4, 3, 2, 1. तो जब exactly same reverse order है, तो उस केस में हम बोलेंगे correlation will be -1. correlation कैसे होगा? -1. And even you can solve this and get the result, you will get -1. 29. When we are not concerned with the magnitude, जब हमें magnitude से value से कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? Then we use coefficient of concurrent deviation. Option number C. Quickest method to find correlation. तो क्योंकि हमें डेविएशन कैलकुलेट करना ही नहीं है, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट एंड इजी हो जाती है इन केस ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन. ऑप्शन नंबर बी. Then what are the limits of coefficient of concurrent deviation? That means R की लिमिट पूछी है. It is again same -1 to +1 and both inclusive. So यहाँ से आपका regression start हो गया है. This we will be covering in the next class. And from set B, you can try some of the questions.
like let's try the first one here. If for two variable x and y, the covariance, variance of x and variance of y are given, find out the correlation coefficient. तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कोवेरियंस वाला. R is equal to covariance upon neta x into neta y. So what is covariance? Covariance is 40. 16 is the variance of x. तो स्टैंडर्ड डिवीएशन कितना होगा? तो 16 का स्क्वायर रूट कर दें, इट इज 4. 256 का स्क्वायर रूट, इट इज 16. तो 40 divided by 64, you will get the answer 0.625. 0.625. This is the value of correlation. Okay. Now you can try today questions from set B also. And in case of doubt, we will be discussing in the next session, that is with regression. So your today's task is basically to solve set B. Set B आपको अच्छे से solve करना है, and इसके जो भी doubts होंगे वो हम लेंगे with regression in the next session. Okay. So I hope we have covered this chapter very easily. Valley says what to do if it is not possible to do maths every day. See, you have to take at least 1 hour for mathematics daily. जब आप डेली 1 घंटा निकालेंगे तभी आपका एक बॉन्ड रहेगा मैथ्स के साथ में. अगर बॉन्डिंग नहीं रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं मैथ्स के अंदर मार्क्स सिक्योर करने में चैलेंज आता है. सो ऑलवेज इट इज बेटर टू हैव अ बॉन्ड विद मैथ्स. 1 घंटा एटलीस्ट आपको उसमें देना पड़ेगा मिनिमम. तो एक टाइम फिक्स कर ली, शेड्यूल उसके लिए बना दे. एंड ऑल्सो अब एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, स्टूडेंट्स क्लिनिक. आई विल बी शेयरिंग सम मोर थिंग्स सो दैट यू कैन easily score good marks in mathematics. Okay, so let's meet in the next session again. Till then, bye everyone, take care and see you soon.